वॉइस ओवर पर चर्चा. So welcome to another episode of Voice Over Per Charcha. Today in this special episode we have guest Pooja Sadarangani. She's a singer, she's a podcaster, she owns an events company, and she has a show by the name Soulful Saturdays, and she's also a voice artist, a voiceover artist and a dubbing artist. And sorry if I missed anything. So Pooja, warm welcome to you, and thank you so much for being a part of Voice Over Per Charcha. Thank you, Harsh. It's a pleasure to be on your show. Okay, so ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि यू बीइंग अ सिंगर, ठीक है, आप काफी टाइम से आप परफॉर्मर रहे हैं, तो वॉइस ओवर की तरफ, वॉइसिंग की तरफ आपका किस तरह से मतलब इंटरेस्ट आ गया इस तरफ, इस चीज के तरफ? So, I would like to share something with you which perhaps I've not shared with anyone. Okay. Since childhood, I had that little acting ka keeda. Okay. I would love to mimic people, and not people as in, I would love to mimic movie scenes and stuff like that. Okay. But that's about that. And then I would love to mimic singers and all of that. Like I used to take out the voice of Nitin Mukesh ji. Nitin Mukesh. Yeah, being a female, I would try to imitate him and mimic him. And it was very close, like my parents, everyone would have a good laugh and they would be like, ki kya baat hai, exactly. So wo tab tha, but that was that. And then I continued with my training in music. Okay. Many, many years later, when I was learning with one of my gurus, and he told me that, you have to try now singing for jingles. And look at opportunities where you get to sing for jingles. Okay. And then I had a couple of my friends, and one of my friends, he had a studio in South Bombay, and he used to call me for these scratch recordings. He used to call me for these some scratch demos that he had to send to his clients and all of that. And that was for jingles. And then one day he told me, he said, Pooja, you have a very good talking voice. He said, why don't you try voiceover? Okay. Trust me, Harsh, I didn't even know what voiceovers was all about at that point of time. ये कौन सा साल था, if I can? It was around 2013. Okay. And he said, मैं तुझे कुछ ये दूंगा, again demos जो मुझे client को भेजने हैं, just try those. And I just out of fun, I said, fine, sounds good. As long as it's related to my voice, I'll attempt it, And ऐसा होने लगा हर्ष कि जो भी हम लोग demos भेजते थे, like at the first go, it used to get selected. कि yeah. Okay. And they would say कि हमें इनसे ही करवाना है. And the first one I remember that the demo I did a promo for Marina Sandbase at Singapore, which was a Diwali promo. Yeah. Sadly, unfortunately, I never retained the recording because I was like, हाँ ठीक है, हो गया. कौन सी language में था वो? That was in English. English में था. Okay. And then he again told me, he said, see, I told you, you must give this a try. And then I was doing a lot of projects, but just very, very casually, with a very casual approach with him. And then I started kind of liking it, and I asked him, I said, you know what, do you think I should get trained for this? He said, देख तेरा language का problem नहीं है, it's just certain nuances that you should be aware of. And that is the time he spoke about Mr. Anil Mani. Okay, Anil Mani sir, okay. Yeah. And I took down his details, but I'd never landed up calling him, And I said, ठीक है, देखा जाएगा, मुझे अभी अपने म्यूजिक के बीच में कुछ भी नहीं करना है. Coincidentally, कुछ दिनों बाद, my brother, who was a part of this BNI, I don't know if you're aware of BNI, business, all business people, they meet up together. They have this forum, So if you can elaborate more on that a little bit. Yeah. BNI is a business forum where people from different walks of life, they are a part of this particular group where they are promoting their business, and they promote their business, they get business from people who are a part of the group, and it's like a barter system. ये meetup type होता है जैसे. It happens in Mumbai. It happens in Mumbai. I'm not sure if it is pan India, but yeah, it does happen in Mumbai. Okay.
Okay. So my brother, who is a part of BNI, at that point of time, he told me that, you know what, I have this amazing voice artist in the group, and his name is Mr. Anil Mani. I was like, Okay. ये क्या हो रहा है, तो you know? फेस टू फेस मिलना ही हो गया वहां पे. नहीं, मैं मिली नहीं उनसे, ये तो उन्होंने मुझे बताया. अच्छा हाँ, वो ही वाज. ओके ओके, फाइन He फाइन was फाइन, गॉट इट. there. ओके ओके. And then I happened to share this story with my brother, what my friend told me. And he said, Pooja, it's not a bad thing at all. Please go and meet him. He's an amazing person. You know, forget the voice acting bit. But he's just such an amazing person. You must meet him and you must discuss what is your future in this. And that's that. Then I contacted Anil sir, and it was, you know, right from the word go, we connected as a teacher student. He's an amazing human being. And I did my voice training course under him exclusively. And again, I would like to ask you that ये जो आपने जब कोर्स किया, ये which was that year? This was 2014. 2014. Yeah. So still I can say almost a decade आप मतलब voicing में enter हो चुके थे, apart from your singing and you know, you being a performer. So ठीक है, तो आपने ये वर्कशॉप लगभग कितने टाइम तक हुआ, जैसे in terms of duration? See, it is a 15 class workshop. Okay. But it was very flexible. Like I didn't need to go every day or something of that sort. It was thrice a week. Okay, thrice a week. Thrice a week. But suppose if I can't make it on a particular day or something of that sort, sir was very flexible and he would, you know, let me come on another day and all of that. Okay. And at the same time, even if he felt that, you know, the student is not prepared, he would give you extra training and stuff like that. So that's how it happened. That's really flexible. आपके लिए कभी-कभी ऐसा रहता होगा कि मे बी रेगुलरली नहीं जा पा रही क्योंकि आपके जैसे इवेंट्स भी होते हैं, कभी-कभी आपको कहीं परफॉर्म करना होता है, करेक्ट? तो मैं कह सकता हूँ कि एक डेढ़ महीने में आपका हो गया होगा कोर्स, अगर हम जैसे एक थ्राइस अ वीक अगर कंसिडर करते हैं, उसमें अगर आपने थोड़ा बहुत मिस भी कर दिया, जैसे अगेन या सो 1.5 months this got over. Now I would like to add something, like I would like to ask something in fact कि जैसे even I used to sing once upon a time. I'm curious to hear you sing. मतलब वो जो कॉलेज का टाइम होता है ना, जहाँ पे हम कॉलेज फेस्ट में हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो इट्स ऑल स्टार्टेड विद सिंगिंग. मुझे मिमिक्री करने का शौक तो था, तो मैंने गाना शुरू किया और दिस विल बी सरप्राइजिंग टू यू, मैं जीत गया था कॉन्टेस्ट. दैट वाज इन दुबई, बिट्स पिलानी दुबई. ऑल वर्क लाइक वहाँ पे इस तरह के जो भी होते हैं फेस्ट वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे आई वन अवार्ड फॉर दैट. सो आई वॉन अ प्राइज फॉर दैट. सो जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि सिंगिंग नो डाउट मेरा तो रियाज वगैरह छूट गया, बट मुझे मन बहुत करता है कि मैं कभी कभी इसके लिए टाइम निकालूं. तो जैसे लो पिच हाई पिच में हमारा जो मॉड्यूलेशन होता है, जो सिंगर्स होते हैं, तो वो उतार चढ़ाव होता है आवाज में, तो क्या वो वॉइसिंग में किसी हिसाब से हेल्प करता है, वॉइस मॉड्यूलेशन की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो? So I would say, see, the first advantage of being a singer and then coming into voicing is the fact that you're comfortable with the mic, number one. Yes, that's true, yeah. You know, so वो एक inhibition नहीं कि oh my god, you know, how am I sounding, ये क्या लग रहा है, you know, शायद आर्टिस्ट को I don't know, but I think नहीं, आपने सही कहा, बिल्कुल यूज्ड टू होते हैं. जैसे अपनी जो आवाज जो होता है ना, जब हम सुनते हैं तो हमें एकदम वो एक हमारी जजमेंट हो जाती है. Exactly. If I'm not wrong, yeah. Definitely. And हमें ये मालूम है exactly हमें अपनी आवाज कितनी पिच करनी है, कैसे पिच करनी है. That is your comfort with the mic, number one. As far as modulation is concerned, Harsh, I have realized, especially in the last 1.5-2 years, or rather you can say ever since COVID happened, getting more deeply involved in both the fields. I feel the technique required for both the professions is completely different. Different, yes. Yeah. You know, singing के समय आप बिल्कुल भी अपनी आवाज थ्रो नहीं कर रहे हैं. It's a natural. Your talking voice is the same as a singing voice. It has to be that way, ideally. Yes. Whereas voiceover is far more demanding. You have to put in that extra pressure at times, you know, to sound a particular way, to make it sound, you know, bass अगर आवाज में चाहिए तो automatically you have to get that bass. For example, I'll give you a simple example to understand this. आपने उषा उत्तुप जी का नाम सुना है? Yes.
अब मेरी आवाज, if you notice her talking voice also, she has a lot of bass in her voice. Now if I have to constantly sing like her in her voice, in no time I'm going to land up damaging my voice. So I have a natural voice and I will sing in that particular voice. That's about it. But voice overs का अलग है, that if you require, कोई बोलते हैं कि एकदम serious tone चाहिए हमें, कि एज इफ जब हम नरेशन कर रहे हैं या किसी सीरियस डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो एकदम सीरियस नरेशन चाहिए. कभी कभी वो एक प्रोजेक्ट है तब तक आवाज ठीक है, अगर कंटिन्यूअसली उसमें करना पड़े, it kind of affects your voice because the technique required for both the things is different. But एक मैं just कह सकता हूँ कि only for the modulation, changing text. I got your point कि दोनों के लिए, क्योंकि जैसे suppose voice acting है, वहाँ पे कोई कैरेक्टर है जिसका आपको रोल प्ले करना है और उसकी आवाज थोड़ी भारी टाइप की है, तो वहाँ पे आपको उस हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से ऑब्वियसली बिहेव करना होगा, आवाज देनी होगी अपनी. बट मेरा एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर जो सिंगिंग जानता है, जैसे जो सिंगिंग करता है, एंड प्लस देयर आर इमोशंस आल्सो, तो मे बी अगर वो उन दो एस्पेक्ट्स को जानता है तो शायद वो वॉइसिंग, नो डाउट, एज यू टोल्ड करेक्टली दैट द टेक्निक्स आर डिफरेंट, बट उसका इस्तेमाल यहाँ जरूर हो सकता है, एक जजमेंट जरूर हो सकती है. मेरा कहने का मतलब ये है वो डेफिनेटली काम वो हो सकती है. Yes, perfect. Okay, in fact, so my Guruji, currently my Guruji, my singing Guruji, he was not at all happy when he realized that I'm like pursuing voiceovers so diligently और इतना सारा कर रही हूँ. He said, अरे आपकी आवाज खराब हो जाएगी, आप मत करिए. Okay. सर नहीं, दोनों भी मिले. I think this is a message that जैसे काफी ऐसे लोग हैं, मुझे कभी कमेंट्स है ना, तो कुछ लोग लिखते हैं that we are guitarists or we are like singers, तो वो भी शायद वॉइस ओवर्स में, तो ये इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है कि टेक्निक का यहाँ पे ध्यान रखना होगा. राइट. मैं ये भी जानना चाहूंगा, आपके जो गुरुजी हैं जिन्होंने जिनसे आपने सिंगिंग सीखी, आई वुड लाइक टू नो आपने. तो फिलहाल मैं प्रशांत समाधार जी से सीख रही हूँ. ओके. And he has been the mentor for Arijit Singh. एक रियलिटी शो आता था, फेम गुरुकुल. यस. तो वहां पर वो उनके मेंटोर रह चुके हैं. After that also Arijit was coaching under him. Shreya Ghoshal has coached under him. He's been he's teaching Farhan Akhtar and so many other celebs, you know. तो उनसे मैं at the moment ओके. एंड इसके अलावा आप सिखाते भी तो है ना, जैसे सिंगिंग, यू टेक क्लासेस, आई गॉट टू नो. ओके फाइन. ये एपिसोड मुझे लग रहा है वॉइस ओवर से ज्यादा, मुझे वॉइस ओवर तो है ही, हम उसके बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं, बट इवन मेरी भी जो मेमोरीज है वो मैं रिवाइव कर पा रहा हूँ. नॉट जस्ट सिंगिंग बट मे बी आई कैन जस्ट ऐड दैट इन शॉर्ट. मैंने बचपन में तबला सीखा हुआ है when I was in 10th standard, and उसके मैंने 2 लगभग एग्जाम्स भी दिए थे. So ये सारी memories आज रिवाइव हो रही है मेरी, singing and playing tabla. So anyways, so you took the training in 2014, okay? उसके बाद जैसे आपने ऑफ कोर्स अपने डेमो सैंपल्स प्रिपेयर करे होंगे, उसके बाद कैसा रहा आपका सफर, मतलब जैसे प्रोजेक्ट्स मिलना और उसमें अलग अलग तरह के, इफ यू कैन कैटेगराइज इनटू वॉइस ओवर एंड डबिंग स्पेसिफिकली. Dubbing started much later. Dubbing started after COVID. After COVID, okay. Yeah. Voiceovers, honestly, I was not consciously trying anything because, again, like I said, at that point of time, I was focusing more on my events and all of that. But in my events, and I have a music group called Khwahishein, where I have singers from all walks of life. So in all these events, I was doing a lot of anchoring. Okay. Yeah. So anchoring is something, again, I have been very passionate about. So that is one thing that was happening. Then all my voiceover projects which I got, they were just through word of mouth. Not that I really sent my samples anywhere or I went to studios to give my samples anywhere. Everything happened by word of mouth, and they were all good projects that were coming my way. Yeah, this is actually जैसे आपका ग्रुप होता है, if you are in the creative circle, so वहाँ पे जैसे आपका पता चलता है कि you are also into this. Yeah, exactly. So I have seen this aspect कि मतलब even without marketing, without any particular shout out, ये आपको reference के जरिए काम मिलता है. तो आप अपने वैसे, if I'm not wrong, आपने अपना घर पे तो स्टूडियो डेवलप कर लिया होगा, या फिर आप बाहर जाके मतलब हायर करते थे? How it used to happen for voiceovers? At that point of time, I didn't have a home setup. Home setup, Okay. again,
कोविड के बाद ही हुआ. कोविड के बाद हुआ. Okay. But like I told you, I had my composer friend who recommended that I should get into voiceover. Okay. तो उनके थ्रू तो बहुत ही ज्यादा काम आता था voiceover का. And Okay. again, I had another composer friend who was in South Bombay. Even he used to give me a lot of voiceover work. He would just call, and they were just like at 15-20 minute distance from my place. So they would just call me, Pooja, arey so and so project aaya, just come and do the demo. The record and all. Okay. Yeah, exactly. Nice. So it's really I can understand it's challenging क्योंकि singing events company आपकी साथ में ये सारा manage करना. But हाँ, मजा भी आता होगा जैसे वॉइस ओवर्स का काम जैसे बीच में आता होगा तो. Harsh, my belief is that when you make your passion your profession, Yes, then it doesn't absolutely true. seem tiring, and it doesn't you don't feel कि मैं मंडे सवेरे उठकर कर क्या रहा हूँ. Correct. Morning is calling that आज क्या होगा. No, but मेरा मतलब एक इसमें एस्पेक्ट की जब दो चीजें साथ में हो रही हो, मेरा कहने का मतलब ये यहाँ पे मुझे थोड़ा लगता है जैसे आपने कहा दोनों की टेक्निक्स भी अलग अलग है. तो मुझे ये नहीं होता है. मुझे अगर मैं बोल सकती हूँ अगर how I can word it as it is not stressful for me, but at times I do feel sad कि I'm giving one importance over the other. Okay. या कभी अगर वॉइस ओवर ज्यादा हो रहे हैं तो सिंगिंग टेक्स अ बैक सीट, कभी सिंगिंग ज्यादा हो रही है तो वॉइस ओवर टेक्स अ बैक सीट. बट देन आई जस्ट गो विद द फ्लो. ठीक है, जो भी आ रहा है इज गुड. अच्छा ही है मतलब दोनों इफ यू आर एंजॉयिंग द प्रोसेस डेफिनेटली नथिंग बेटर देन दैट. सो आई थिंक दिस होम सेटअप जो आपने मुझे बताया, आई थिंक ये काफी आर्टिस्ट में मैंने देखा है कॉमन चीज सबका लॉकडाउन के बाद हुआ है. मेरा तो खुद ही काम जैसे I was into consultation and all digital marketing and everything, so this started in 2020. तो मुझे लग रहा है सब आर्टिस्ट का लगभग, तो इसका मतलब ये कोविड से पहले ज्यादातर काम स्टूडियोज में होता था. जी. और फिर जो है जैसे this after this first wave, second wave, तो लोगों ने फिर अपना घर पे even I saw so many voice artists, renowned voice artists and sound engineers, उनके मैं वेबिनार अटेंड करता था कि घर से कैसे रिकॉर्डिंग, क्योंकि टॉपिक ही वही था तब. क्योंकि सबको पता था कि कुछ इट वाज अनप्रेडिक्टेबल. 3-4 महीने का मतलब ऐसे ही था, डाइस ही था, क्या होने वाला है किसी को कुछ पता नहीं था. बट इतना पता था रिकॉर्डिंग घर से करनी पड़ेगी आपको. इतना पता था रिकॉर्डिंग घर से करनी पड़ेगी. एंड यहाँ पर मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि हर्ष जोशी के वीडियोस, the tutorial has really helped all the people, everyone, from basic recordings to editing to everything, because हम लोग if you go to see sound engineers भी बन गए थे घर पर, अपने samples भी खुद edit करके भेजने हैं. All that we had to do. So your tutorials on Audacity and your tutorials on how things have to be done made life really simple, Harsh. Really. Thank you so much. Really glad that my videos served the purpose in that particular way. So anyways, एक और चीज मैं अपने viewers, listeners को, subscribers को बताना चाहूंगा. As I mentioned about her show, Soulful Saturdays. So सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा if you can just tell me in short about this particular show, and I would like to mention कि बहुत ही renowned voice artists, या मैं कहूंगा I would like to name like Binayfa Mirza, a very renowned famous voice artist, and पिछले वाले एपिसोड में तो कमाली था, सुदेश भोसले जी आपके शो पे आए थे. ठीक है, तो आप सोलफुल सैटरडेज के बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं मेरे व्यूअर्स को और पता चले इसके बारे में, लिसनर्स को पता चले इसके बारे में. तो I would like to start with saying that I have always prayed to God that may the talent that He has given me, may it be utilized to make people happy. Now, whether that's through singing or that's through voicing, may make people happy in any way. Soulful Saturdays, again, the thought came up after COVID. And I have अब मेरा जो लास्ट एपिसोड था ऑफ माय फर्स्ट सीजन, द लास्ट एपिसोड व्हिच आई जस्ट डिड लास्ट वीक, उसमें मैंने बताया है हाउ इट ऑल स्टार्टेड. आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, बट आई विल जस्ट गिव यू अ क्रक्स ऑफ द होल थिंग. आई रियलाइज दैट आफ्टर कोविड एवरीवन, स्पेशली फर्स्ट वेव के बाद जब थोड़ी बहुत हम लोग एक दूसरे से मिलने लगे, वी स्टार्टेड मूविंग आउट ऑफ द हाउस एंड ऑल ऑफ दैट, आई रियलाइज्ड व्हेन आई मेट माय नियर एंड डियर वंस, एवरीवन वाज इमोशनली टॉर्न. मैंने एक लाइन वहां पर कही जहां पर मैं when I was anchoring for one of my events, I said कोविड की वजह से सारे लोग मास्क पहनने लगे, पर कोविड ने एक्चुअली सबके मास्क उतार दिए. हाँ,
हम जो एक बहुत मुखौटा डीप मीनिंग है इसका. जी हम जो एक मुखौटा पहनकर घूम रहे थे वो सारा ही सबको छोड़ना पड़ा because everyone was so helpless. So that experience, that feeling was not very good. That there's too much negativity. Everyone around you is talking about death. Everyone is talking about cases and how they've And lost. in fact, the second wave, the second wave was much deadlier than the first one. Exactly. And it was shocking with the way we were hearing about death. I think शायद पहले भी होती होंगी, but यहाँ पर everyone became so much. Every day you're hearing about someone dying. Every day you're hearing Yes. about someone losing their near and dear one. I said, अगर मैं और कुछ नहीं कर पाई, at least मुझे जो भी I have been a student of philosophy for the last 20 years now. Okay. And I've done a lot of self-help courses, and so I decided that whatever little knowledge I have, I want to put that into words. I want to put that out to the world in whatever way I can. And I started with a very naive initiative, Harsh. I just started making audio recordings, which I would put on my WhatsApp groups. Okay. That's about it. फिर ये लोगों को अच्छा लगने लगा and I used to put it on every Saturday. I said लोग बोलते हैं कि हफ्ते की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, मैं बोलती हूँ हफ्ते का एंड भी अच्छा होना चाहिए. So put it on a Saturday, you know. Okay, so that's how the name came, Soulful Saturdays. Yeah. Okay. And I started putting it as a very, very, very raw audio, and people started liking it, you know. So of course they would compliment on the voice and all of that. That was not the intention. But they started liking the content. And then a couple of my friends told me that, Pooja, why don't you put this out on social media? You have nothing to lose. People who are interested in this kind of content will automatically hear it. And that's when I decided, okay, let me try putting it, uploading content on YouTube. और तब मेरी आपके साथ काफी बात हुई थी उस दौरान. Yeah, how should I go about it? You guided me so much, and you connected me to people who could help me to facilitate this process. And in fact, मैंने आपको ये भी कहा था कि जैसे this is a format like I can say एक interview के अलावा before the interviews, this particular audio, Yeah. I told you to put on this podcasting portals, right? Spotify वगैरह पे भी, yeah, of course. हाँ, Spotify. तो ये तो आपने बताया ही था, but मैं उसकी शुरुआत की बात कर रही हूँ. शुरुआत के. You were one of the persons who helped me facilitate this journey. YouTube, yes. Yeah, the YouTube journey, which was very, very cumbersome for me because I was like, यार ये क्या कर रही हूँ, कहाँ से start किया था, अब ये कहाँ पर जा रहा है. But I think वो सिर्फ वो हल्का सा वो glitch initially था. एक बार we got set over there, then it's once you get into the process फिर तो, and I'm really glad कि जो मेरा पहले का जो experience है, before getting into voiceovers and getting into the creative field, जो मेरा पुराना experience है, मुझे काफी अच्छा लगता है कि मैं अपनी community में voiceover artist में ऐसे creative लोगों में मैं share कर सकूं जो भी मैं जानता हूं. So really glad it helped you out. We are grateful to you. I think we are blessed that we are getting everything. वो बोलते हैं ना, spoon feed कर रहे हो आप लोग को. रोज कोशिश रहती है अच्छा कुछ share कर सके. Definitely. And coming on this particular part, dubbing, आपने कहा जैसे आपका ये कोविड के बाद आपका डबिंग का काम शुरू हुआ. So any particular project you would like to share, या फिर आपने कोई, maybe you can just share like एक web series का काम किया, एक movie का, if you don't want to name it, following the protocol. Right. So yeah. So dubbing journey started with I came to know about doing the Sound and Vision was conducting Sound and Vision headed by Mona Shetty ma'am, yeah. So they were conducting dubbing courses which were happening even pre-COVID. And क्योंकि इतना time था, and I said, since this is also an extension to voiceovers, I want to just explore the area. Since I told you वो acting का एक कीड़ा हमेशा से था, कि क्या करना है उसका, so I just thought explore करके देखते हैं. And that's when I did the dubbing course with Sound and Vision. That time it was online. Okay. And we did that, and after that the entire journey of dubbing started. So I used to get calls from Sound and Vision only, where I had to go and do the dubbing and all. So initially
And now this is again for the viewers, and this is also for the aspiring voiceover artists, and this is also for all the aspiring dubbing artists. It's not some cakewalk. It's not that आप initially जाएंगे and हाँ आपको so and so का character मिल गया, आप dub करने को ये वो. It starts with a very very basic thing called as crowd dubs. Yes, crowd dubbing specifically. So because you want to exactly understand कि हो क्या रहा है. Now dubbing and voiceovers are totally different. तो अलग ही है ये तो. इनफैक्ट मैंने कभी जब मुझे कमेंट्स आते हैं ना मेरे वीडियो पे कि हमें डबिंग करनी है, कभी वैसे क्लाइंट्स का भी आता है कि हमें डब करवाना है, तो मैं पहले उनसे क्लियर करता हूँ कि डब अलग है, वॉइस ओवर अलग है. मैंने इनफैक्ट इसका एक अपना ट्यूटोरियल बनाया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वॉइस ओवर एंड डबिंग. और काफी लोग जब कमेंट्स में पूछते हैं कि मुझे डबिंग करनी है, तो मैं सबसे पहले ये मतलब उनसे क्लियरली पूछता हूँ कि आपका मतलब क्या है. आप पहले एक बार मेरी वीडियो भी देख लो, ये मतलब एज अ रेफरेंस, क्या वॉइस ओवर की बात कर रहे हो या डबिंग की बात कर रहे हो. बहुत दोनों बिल्कुल अलग प्रोसेस हैं. और इसमें जो काफी लोग मुझे कहते हैं कि आई एम रियली इंटरेस्टेड, आई वांट टू गो टू मुंबई, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सीखिए, और ये इसमें पैर जमाने में टाइम लगेगा. इट्स नॉट दैट इजी. एंड हर्ष, सीखना एक बात है, यू आर जस्ट टिल you've not experienced doing that in front of the mic, and वहां पर भले आपका सालों साल का वॉइस ओवर का एक्सपीरियंस हो या मेरा सिंगिंग का भी साथ में, everything put together, dubbing is all about spontaneity. Yes, you have to be very spontaneous in dubbing. Because what I understand कि आप उसी स्पीड में डायल, मतलब कोई भी जैसे एक छोटा सा अगर एक लाइन है उसका, इसको मैं एक हिसाब से कैटेगराइज कर सकता हूँ वॉइस एक्टिंग में. दो चीजें होती है, वॉइस ओवर, वॉइस एक्टिंग. और वॉइस एक्टिंग का जो एक टाइप होता है जिसमें आप उस लाइन को उसी एक्सप्रेशन के साथ और उसी स्पीड के साथ उसे रिकॉर्ड कर रहे हो, और वहां पे एक्टिंग भी आ रही है. तो साइमल्टेनियसली आप पहले सुनते हो फिर उसको रिकॉर्ड करते हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे काफी चीजें आती है. एंड अनलाइक वॉइस ओवर, यहाँ पे आपको प्रिपरेशन टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है. हाँ, यहाँ पे नहीं मिलता. यहाँ तो सीधा स्क्रिप्ट हाथ में मिलती है. Exactly. Most of the cases, मतलब मुझे अभी लास्ट 2-3 साल में कभी भी स्क्रिप्ट हाथ पहले से नहीं मिलता है. It's on the spot, you know. Even in, I can say in voiceovers also, like अभी क्या, अब शुरुआत में जैसे प्रैक्टिस करने का एक अलग एस्पेक्ट हो गया, बट कभी ऐसा होता है कि जैसे बैक टू बैक डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग होती है, तो वहाँ पे भी इसका भी ऐसी रूटीन बन गया है कि स्क्रिप्ट हाथ में आती है, रिकॉर्ड किया, डिलीवर कर दिया. और कम से कम that is, we still have the creative freedom over there. Yes, true. Whereas यहाँ पर you absolutely have to follow the dubbing director's instructions. थोड़ा भी ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते. Creative freedom नहीं है वहाँ पर. हाँ, यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे मतलब obviously उनको जो it's same like acting. मतलब जैसे डायरेक्टर जैसे हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये टेक सही नहीं था, वैसे आपको बोलना है, तो सेम वही है. बस फर्क इतना है कि हमारे सामने कैमरा नहीं है, हमारे सामने माइक्रोफोन है, उसके सामने हम बोल रहे हैं. Perfect. True. So anyways, Pooja, thank you so much for sparing the time and coming to this show, Voice Over Per Charcha, and thank you so much. And again, wish you all the best for your everything, your voicing, singing journey, for your events company, for your upcoming episodes of Soulful Saturdays, everything in short. Thank you so much, Harsh. And for everyone who is going to be seeing this episode, I want to let you all know that Harsh is one of the most unconditional artists I've met. Always ready to help. He's busy in his own way, with his own work commitments, with putting so much content out on social media. But there has never been an occasion where you have not come to my rescue, so to say. कभी-कभी मैंने आपको audios भी भेजे that I'm feeling helpless and I don't know, मैं confused हो रही हूँ, ये वो whatever. And you've been so nice to just fix up a time where we can talk and helped me with so many things. And I'm sure you just don't do that with me. You're doing that with everyone around, and I bless you for the way you're conducting yourself, and may you receive a lot of success in whatever you're doing. Oh, thank you so much. And it was great to have you on the show, seriously. Thank you. A amalgamation of music and voiceovers, dubbing, everything. Thank you.